सो आई हैव टोल्ड यू कि एआई खराब हो सकता है, अच्छा हो सकता है. हाउ डू यू जज? हाउ डज अ ब्यूरोक्रेट और अ गवर्नमेंट पर्सन जज कि कैसे, हाउ डू वी डिसाइड what is what should be allowed, what should not be allowed, etc. Right? One second. Yeah, back. There are some models of AI governance which are worldwide used. First of all, let me warn you here. India doesn't have any AI governance right now. India only has policy making. India के दो policy documents है इस issue में. If you are curious, you can read them. They're publicly available. नीति आयोग ने एक डॉक्यूमेंट बनाया था कुछ सालों पहले called AI for all, and there is something called the AI task force which had created a document. Both these documents are extremely flawed documents. They are extremely wanting compared to the policies other countries have, which are much more mature and much more, how should I say, um, have a lot more thinking about how to govern AI. So India भी थोड़ा पीछे है इस मामले में. What are these ways of governing AI? First is called fairness, accountability, transparency or fact. फेयरनेस क्या होता है? सिंपल एग्जांपल, कभी गूगल ट्रांसलेट पे जाओ, राइट समथिंग इन अ लैंग्वेज जिसमें जेंडर नहीं होता, लाइक जापानीज. जापानीज डज नॉट हैव जेंडर, राइट? इन जापानीज ही इज अ डॉक्टर और शी इज अ नर्स में ही या शी नहीं होता, वो होता है, वो. दैट पर्सन इज अ डॉक्टर, दैट पर्सन इज अ नर्स. राइट दैट इन जापानीज, translate that to English. Google Scholar, oh sorry, Google Translate has this very bad habit कि it will translate it is a doctor to he is a doctor, it is a nurse को she is a nurse. मतलब Google Translate अपने आप से मान लेगा डॉक्टर है तो मर्द ही होगा, नर्स है तो औरत ही होगी. समझ रहे हो? Now, it doesn't mean that Google Translate is misogynist. Google Translate को औरतों से दुश्मनी नहीं है. प्रॉब्लम ये है that Google Translate is using data. डेटा इंसानों से आ रहा है और इंसानों को औरतों से प्रॉब्लम है. इंसानी सभ्यता ने औरतों को दबा के रखा हुआ है. तो इंसान जिस तरह बात करते हैं ना, उसमें वो चीज निकल आती है कि हम औरतों को थोड़ा स्पेशल टाइप से ट्रीट करते हैं. जैसे मतलब संस्कृत में अगर देखा जाए, नर इज द नॉर्मल, नारी इज द डेरिवेटिव. जैसे जर्मन में, जैसे पुराने जमाने में मैन और वुमन, मैन यूज्ड टू बी जेंडर न्यूट्रल, वर मैन यूज्ड टू बी मेल एंड विफ मैन यूज्ड टू बी फीमेल. विफ मैन से वुमन बन गया, बट वर मैन को उन्होंने हटा दिया और मैन को उन्होंने मेल बना दिया. यानी मर्द नॉर्मल है, औरत डेरिवेटिव है. सो ऑल थ्रू आउट ह्यूमन लैंग्वेज, ह्यूमंस हैव बीन बायस्ड अगेंस्ट वुमेन. ये सारे सभ्यताओं, सारे कल्चर, सारी भाषाओं में होता है, राइट? अब गूगल ट्रांसलेट की तो गलती नहीं है, वो तो मशीन है. इट इज जस्ट लर्निंग थ्रू इट्स पैटर्न रिकॉग्निशन फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज, एंड इट हैज लर्न दिस थिंग दैट मतलब मर्द स्पेशल होता है, औरतों को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करो. ठीक है? बहुत सारे एआई में चीज आ जाती है बिकॉज एआई इज मोस्टली मशीन लर्निंग एंड ऑल मशीन लर्निंग इज डेटा बेस्ड. डेटा अक्सर बायस्ड होता है क्योंकि वो इंसानी सभ्यता से आता है, उसे कलेक्ट किया जाता है और लोग बायस्ड होते हैं. जैसे कि आपको पता होगा पुलिस गरीब लोगों को ज्यादा परेशान करती है, राइट? मतलब आप अगर अमीर हो, आपने सूट बूट पहन रखा है, इफ यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, आप चोरी करके निकल जाओ, पुलिस कुछ नहीं बोलेगी. गरीब आदमी हो, ए जरा, ठीक है, पुलिस विल एक्ट लाइक दैट. अब पुलिस अपना डेटा रिकॉर्ड करती है, अंग्रेजों के जमानों से रिकॉर्ड करती आ रही है. अब आपने एक एआई बना दिया जी, एंड सपोज यू मेक एन एआई मशीन लर्निंग टू प्रेडिक्ट ये आदमी क्रिमिनल है कि नहीं. एआई को तो यही लगेगा ना कि इस आदमी ने अगर सूट बूट पहन रखा है, अंग्रेजी में बोलता है तो क्रिमिनल नहीं है, अगर गरीब लगता है तो क्रिमिनल है. उसमें एआई की गलती नहीं है. उसमें आपने उसको बेहुदा प्रॉब्लम क्यों दिया सॉल्व करने को? क्योंकि द डेटा फॉर दैट प्रॉब्लम विल कम फ्रॉम भारतीय पुलिस, एंड यू नो हाउ द पुलिस इज. सो उनका जो डेटा होगा इट विल बी बायस्ड अगेंस्ट पुअर पीपल. देयर इज सिमिलरली कास्ट होता है, ठीक है, जेंडर होता है, इनकम लेवल, वेल्थ वगैरह, सारा डेटा बायस्ड होता है सोसाइटी का. सो फेयरनेस का मतलब है ट्राई टू मेक एआई विच इज नॉट बायस्ड, ट्राई टू गेट क्लीन डेटा. अब क्लीन डेटा कैसे आएगा जी? क्योंकि उसके लिए तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे. उसके लिए तो आप रैंडमली कोई भी डेटा नहीं यूज कर सकते. सो
The first archan which AI leads to is that most machine learning used in real life use cases is based on very, very bad data, because that data is produced by human beings and humans are bad. Matlab, humans are not bad, but human society is bad. Human society is biased against poor people. Human society is biased against women. Human society is biased against lower caste people. So आप वहां से डेटा निकाल के एआई को पकड़ा दोगे तो एआई विल वर्क इन अ स्टूपिड मैनर. सो फर्स्ट गवर्नेंस ऑफ एआई, उसको फेयर बनाओ. एंड यहीं पे आकर 99% एआई धोखा खा जाते हैं. लाइक दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम अराइज. नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड इन योर नॉर्मल लाइफ. अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी हिंदी में बोलते हैं इसे. इलोन मस्क जी ने अपने गाड़ी में लगा दिया ऑटोमेटेड नेविगेशन सिस्टम. ठीक है, वो गाड़ी गई, 2 लोगों को ठोक दिया उस गाड़ी ने. हु इज रिस्पॉन्सिबल? इज द ड्राइवर रिस्पॉन्सिबल? ड्राइवर बोलेगा जी मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बैठा हुआ था. इज द एल्गोरिथम रिस्पॉन्सिबल? एल्गोरिथम को आप जेल ले जाओगे? एल्गोरिथम को थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी का अब आता है. इज द इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल वर्किंग एट टेस्ला मोटर्स? What is responsible if a piece of AI goes and kills somebody? This is also a problem which has not been solved. और इसका आंसर एक्चुअली बहुत सिंपल है. Don't make AI which has to take decisions which could actually harm people, because you can't hold an AI accountable. There is no such thing. ठीक है. तीसरा है ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी का मतलब है that if a machine learning algorithm made a decision, there should be a way to figure out why it made that decision. You know, a lot of machine learning these days is used in insurance and loans. आप बैंक में गए, अपने लोन के लिए अप्लाई करा, एआई ने कह दिया मुझे आपकी शक्ल अच्छी नहीं लगती, हम आपको लोन नहीं दे रहे. आप बोलोगे सर मैं तो रोड पे आ जाऊंगा, मुझे तो लोन चाहिए. ठीक है, बैंक ने बोला भैया हमारी गलती नहीं है, एआई ने बोला है कि आपको लोन नहीं दे सकते. नाउ प्रॉब्लम इज दैट most of the current AI is not very transparent. Why? Because the more complex a mathematical model is, the harder it is to understand why it made a decision. Those of you who work with machine learning know what is deep learning. Deep learning is very sophisticated machine learning models. It's very hard to find out why a deep learning model made a decision. In fact, there is a whole area in AI these days called explainable machine learning, which is trying to do research to create machine learning models which are transparent. So the first step to govern an AI is to measure it on these 3 metrics: fairness, accountability, transparency. I've just explained to you what these 3 metrics are. But there is a problem here. The problem here is that, can anybody raise their hand and tell me, even if an AI is fair, accountable, and transparent, why could it be still problematic? Anyone? Okay, I'll give you an example. Yes, Shubham. It would decrease the number of jobs, maybe. No, वो तो हम आएंगे अभी उस पे. अभी तो इकोनॉमी में आएंगे, लास्ट पॉइंट. ठीक है, वो उस पे तो क्वेश्चन मार्क लगा रखा है मैंने, because nobody does research on that these days. Okay, very simple example. You are 100% fair, accountable, and transparent company which makes aeroplanes, not AIs. ठीक है. फेयर कैसे? इस कंपनी में 50% मर्द है, 50% औरतें हैं, सारे धर्म, जाति इत्यादि इत्यादि रिप्रेजेंटेड है इस कंपनी में. कोई चांस ही नहीं है कोई कह सके इस कंपनी में अनफेयरनेस हो रही है. सबको बराबर सैलरी मिलती है, सबका काम मेरिट के हिसाब से होता है, सबका हर साल वो होता है जो भी बोलते हैं उसे क्या, इवैल्यूएशन. एवरीथिंग इज ऑन पेपर. नथिंग इज अनफेयर इन दिस कंपनी. ठीक है. इट इज ऑल्सो वेरी अकाउंटेबल. कंपनी में कुछ भी लोचा हुआ, एवरीबडी हैज नो, किसको जाना है, किससे बात करनी है, लॉयर वॉयर सब लगा रखा है, सब अकाउंटेबल. इट्स ऑल्सो वेरी ट्रांसपेरेंट. एवरी कंपनी डिसीजन इज आउट देयर इन द ओपन. वेबसाइट में जाइए, क्लिक करिए, सब पता चल जाएगा हु डज व्हाट इन दिस कंपनी. एंड दिस एरोप्लेन मेकिंग कंपनी makes a fighter jet which can drop a nuclear bomb.
The problem is that that fighter jet is made in absolutely fair, accountable, and transparent fashion. It does what it says. It says that it can drop a nuclear bomb. It does drop a nuclear bomb. But a nuclear bomb will kill millions of people. आप बोले हमें तो फर्क नहीं पड़ता, हम तो फेयर है, अकाउंटेबल है, ट्रांसपेरेंट है, हमने कहा था हम ये बनाएंगे, हमने बनाया, हमने बिल्कुल वैसे ही बनाया जैसे हमें बोला गया था. प्रॉब्लम ये है कि आपकी चीज इंटरनली 100% कॉन्सिस्टेंट है, एक्सटर्नली जाके वो 1 लाख लोगों को मार देगी. इट इज एन अनएथिकल थिंग. An AI could be theoretically fair, transparent, and accountable. It could do exactly what it says it does, but what it does could be a bad thing. For example, facial recognition. Facial recognition tech. Facial recognition AI क्या होता है? It's a machine learning which looks at your face and tells who it is, right? वैसे तो this is not bad. Your laptop has facial recognition. You open your laptop, it recognizes you. बट आपने अगर ये चीज पुलिस वालों को दे दी तो प्रॉब्लम है. बिकॉज देन यू नो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जब तक आपने गुनाह नहीं करा आपको सस्पेक्ट नहीं किया जाएगा. बट अपन ने अगर फेशियल रिकॉग्निशन टेक पुलिस को बना के दे दिया तो प्रॉब्लम है. बिकॉज देन दे विल देन दे विल sort of have your photograph in their database. भले ही आपने पहले कोई गुनाह ना किया हो. It is a violation of your constitutional rights. By the way, violation of constitutional rights होने के बावजूद भारत देश में कई राज्यों की पुलिस के पास ऑलरेडी आ गया है फेशियल रिकॉग्निशन टेक. हैदराबाद में यूज होता है, पंजाब में यूज होता है, असम में यूज होता है, अलग अलग जगहों पे यूज होता है. ठीक है. क्यों? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था इंडिया में एआई रेगुलेशन को लेकर कोई कानून नहीं है अभी तक. तो कोई कुछ भी चीज बना के किसी को भी बेच सकता है. So all I'm talking about is hypothetical, by the way. Like India doesn't have a single law about this, but it is bad. Now, a lot of people criticize facial recognition tech, saying something like this: "इसका data set biased होगा जी. It will probably not work on black people the same way it works on white people." Good point. But if it were fair, would it be good? No. There are some technologies, even if they were fair, they would still not be good. And facial recognition tech with the police is one of those technologies. उसका एक और कारण है, वो ये है कि मशीन लर्निंग, जैसे कि मैंने बताया, इट इज स्टैटिस्टिकल, इट प्रेडिक्ट्स पैटर्न्स. ऑल स्टैटिस्टिक्स, ऑल मशीन लर्निंग इज प्रोबेबिलिस्टिक. यू आर एन इंजीनियर, यू नो व्हाट प्रोबेबिलिस्टिक मीन्स कि 99% काम करते वक्त भी 1% गलती जरूर करेगा. And do you want your arrest warrant in the hand of a police who has made a decision not based on their own common sense, but based on a machine which can be randomly wrong at some point? Even if that machine is 99.99999% correct, it can make an error, and that error could lead to you getting arrested. Okay. Now you would say humans भी तो error करते हैं. हाँ, बट ह्यूमंस का आप कॉलर पकड़ सकते हो. एक अगर पुलिस इंस्पेक्टर ने गलती करी और आपको जेल भेज दिया, यू कुड गो टू द कोर्ट एंड से कि माय लॉर्ड, इस आदमी ने मेरे साथ वो करा है, नाइंसाफी करी. अब इंडिया है, उसमें पता है कि कुछ होने वाला नहीं है, बट कहने के लिए अच्छा लगता है सुन के. बट इफ अ मशीन मेक्स एन एरर, वेल, you can't do anything about it. So there are usages of AI which are considered unethical. एक इससे भी बड़ा यूसेज है कि should you let an AI controlled robot drop bombs on people or kill people? किल बॉट जिसे बोलते हैं. यूएन में इस पे बहुत चर्चा चली है. यूनाइटेड नेशन सेड कि ये होना ही नहीं चाहिए, ये अनएथिकल. ठीक है. बट स्टिल मेनी कंपनीज आर मेकिंग इट. साउथ कोरिया तो अपने बॉर्डर पे किल बॉट चलाती है. सो there are many unethical things in the world. Now I just said कि फेशियल रिकॉग्निशन इन पुलिस अनएथिकल है, बट पंजाब पुलिस के पास है. तो आप बोलोगे सर फिर मतलब हाउ? फिर मैंने कहा लॉ नहीं है. तो यहां पे एथिक्स का वीकनेस आ जाता है. जिस तरह फैट का, द वीकनेस ऑफ फैट वाज दैट it doesn't control what your thing does, it only controls internally how it was manufactured. The weakness of ethics is that it cannot be enforced. Why? Because to enforce ethics, you have to go beyond ethics. You need law to enforce it.
If your country doesn't have an AI regulation law, like India doesn't have, India doesn't even have a data protection law. Leave aside an AI regulation law. Even the data protection law right now is a bill. It's not a real law. It's still being debated and it's very diluted. It's very weak. So ethics by itself doesn't mean anything. A company can do one unethical thing after another. How will you stop it? You will go and say, you are unethical. Okay, so what? Unless you have a law to stop me, I will not stop. I will keep making unethical things. So ethics, biggest problem with ethics, it lacks enforcement mechanism. Also, there is a problem with ethics that nobody agrees on what ethics is. You ask 20 different ethics philosophers, they will give you 20 different answers. I will not go into detail here. Ethics has a huge subject in philosophy and there are ways to formalize it, but it is debatable. So because human rights are much more coherent than ethics, because the whole world agrees on what are human rights, many people say कि ethics को पहले तो first you use human rights instead of ethics to make it uniform, so that everybody is agreeing what is allowed and what is not allowed. And because many countries have laws on human rights, you can use those laws to govern AI as well. यहाँ पे फिर भी एक प्रॉब्लम आती है. योर AI is fair, accountable, transparent. It is ethical. It follows human rights. Then somebody in the audience said, but sir, if it takes away my job, correct? It could be a wonderful piece of AI which is fair, accountable, transparent, ethical, everything. But if you lose your job to it or your salary decreases, then what? That is called political economy, right? Intersection of politics and economics. It is a very big field. And right now, unfortunately, nobody is working on कि AI का क्या असर होगा इस चीज पे. Very few people are working on that. इंडिया में बहुत कम पेपर है इस पे. I am working on it, and it's a very hard problem to work on because lack of previous literature on this problem. If any of you are interested in this problem, feel free to join my department and become my student. But yes, this is something which is still in development. We are still thinking about how do we think of AI and how it affects work, salary, the balance of economy, the balance between different countries, the politics, etc. Some of my students are working on such problems. Next slide. Thank you. So that is what I work on. That is how AI, society, and policy making intersect. These are the problems we think about. If you are interested in a future career on AI, always be thinking about how it will influence society. Always think about whether it will help your fellow citizen or whether it will harm your fellow citizen, right? Never, I mean, bolne ki baat hai, because there is no law. I can't force you to be ethical, but I would hope that you are ethical. Yeah, now I'm open to questions. I don't know how relevant this talk was you, because you guys are interested in sustainability, but I think at some point it was relevant because how AI influences society or how we think about all of these things has a relationship with sustainability or with how we use our resources. So I would be happy to answer any questions. Yes, sir. So, as lastly you mentioned, whenever engineering is working on some new technology or something that we think it is beneficial to society, we will have to think on all these aspects which you have explained in your presentation, how it is affecting the whole society by political and ethical and all those ways which you have explained. So hopefully for those who want to start their career in AI, it will be helpful to understand these factors as well. So they can take the decision how to progress in that particular field. Anyone has any question, they can put those questions in chat box. Till then, Professor, we have one question which we received through Google Form, and I think which is quite relevant to this particular topic which you have explained till now. To what extent can AI take control of human life? Okay. That was the question. Okay. So this question
I'm going to compare this question with another question to give an answer. Suppose I ask this question, to what extent can electricity take over human life? In one way, absolutely no extent. In another way, every extent, right? AI is not one technology or one dabba which does one thing. It's a family of, it's a technique. It's a technique for having machines make decisions autonomously using past data. And in that sense, you can have a lot of use cases which use this kind of machine learning, just like you have a lot of use cases which use electricity. But in another way, the answer is absolutely zero, because ultimately an AI is a tool. It's like a toaster or a stapler. You can't think of AI as something which has its own control. No AI is actually intelligent. Like, I hope I have made that absolutely clear, that वो टर्मिनेटर वाला सीन कभी नहीं होने वाला कि मशीन आके कब्जा कर लेंगे, बिकॉज वो होने के लिए कॉन्शियसनेस होना जरूरी है मशीन में. कॉन्शियसनेस डज नॉट एग्जिस्ट. Like, we don't even know how consciousness works in human beings, let alone machines. So as a technology, yes, it is very powerful and it can be used in various use cases. As something which has moral agency, as something which can make decisions on itself, absolutely not. I hope that answers that question. I think so. So if that person is here, he can ask Anybody if else any can person. please raise your hand and ask a question. Don't be shy. And I understand it was a very short talk. Whatever you are curious about AI, you can ask. Don't feel that it will be a bad question or a dumb question, because bad question kuch nahi hota. And another point, sir, is that we can take couple of questions. After that, we have some pre-planned things ahead as well. Okay. So there are some questions in chat box. I will like if you can take those. So Chat box. Danish, can you unmute yourself and ask the question? Yes, sir. I was saying, from your perspective, what is the most unethical thing we are doing nowadays with the help of AI? In the realm of AI. Yes, sir. From my perspective. Yes, sir. Yes, Okay, sir. that's an interesting question. In my perspective, one of the most unethical, however unobserved thing we are doing in the realm of AI is letting AI into human political decision making. So, for example, uh, uh, there are things which used to be done by people before. जैसे शहर को गवर्न कैसे करना है म्यूनिसिपैलिटी डिसाइड करती थी. अब हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे. स्मार्ट सिटी में मशीन लर्निंग यूज होगा टू मेक सर्टेन डिसीजन. मैंने तो भैया मेयर को वोट दिया, मशीन लर्निंग को तो वोट नहीं दिया. आई लाइक टू लिव इन अ डेमोक्रेसी. सो दैट आई थिंक इज समथिंग which I think is very unethical, and it's also something people don't understand that is unethical. क्योंकि जो चीज एकदम सामने से अनएथिकल होती है ना, फेशियल रिकॉग्निशन टेक, दैट पीपल विल अंडरस्टैंड, ओ प्राइवेसी वायलेट हो रहा है मेरा. बट मेरा पूरा शहर का गवर्नेंस हम मशीनरी को दे रहे हैं रादर देन ह्यूमन बीइंग्स, which is completely undemocratic. That is something people don't understand. So yeah, that Yes, is, I think, a massively unethical use of AI, using of AI in governance. yes, sir. Makes sense. Okay, there is another question, and that I think more relevant to what we were thinking about, that sustainability and environment thing. How can we relate AI and the environment, and how AI can be helped to protect environment? Okay, that is actually a very important question, and I'm happy somebody has asked that. First, relation is a very basic relation. AI and the whole digital infrastructure which uses AI, वो हवा में नहीं चलता. It uses a lot of materials which are rare and which comes from massively extractive and unethical practices. जैसे कि आप सबके पास स्मार्टफोन है, ठीक है, और आजकल तो सस्ते स्मार्टफोन भी होते हैं. Do you know that the lithium battery which powers your smartphones comes from mines in China and Africa where workers are highly underpaid? क्या आपको आपके स्मार्टफोन का कार्बन फुटप्रिंट पता है?
लाइक एआई का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज massively dependent on rare materials, on semiconductors, on lithium, on metals which are on germanium, on silicon, on things which have a huge impact on the environment. So expanding digitization has been bad for the planet and unfortunately ये कन्वर्सेशन हम करते नहीं है. दूसरी बात आती है एनर्जी की. ठीक है, recently there was a paper and if you are interested I can share that paper with you in the future which tried to measure कि जिस रेट से हम एआई को बढ़ा रहे हैं उससे एनर्जी कॉस्ट कितना है, और वो एनर्जी कॉस्ट बहुत सिग्निफिकेंट था. यू वुड नो दिस इफ यू हैव अ जीपीयू एट होम. आपके कंप्यूटर में अगर जीपीयू लगा है वो कितना एनर्जी खाता है. एआई एंड अनदर टेक्नोलॉजी फैमिली ब्लॉकचेन, ये दोनों टेक्नोलॉजीज दे कंज्यूम सो मच एनर्जी that entire cities of electricity can be powered with that energy. उससे निकलता क्या है? Is anything of value coming out of it? At some point it looks very inefficient in that sense and उससे global warming पे असर होता है. So when you are buying an Alexa for your home, you know that thing where you can give voice command and it does tell you, उससे आपको कितना फायदा हो रहा है? कुछ खास नहीं, बट उससे एनवायरमेंट पे कितना नुकसान हो रहा है? बहुत ज्यादा. सो इन दैट सेंस वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट एआई के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से what is the harm we are doing to the planet. And by the way, that harm is significant, people are already measuring it. And AI के economy को चलाने के लिए what all rare materials are being dug up all across the planet, उनसे economy पे क्या असर होता है, उनसे countries के बीच के relations पे कैसा असर होता है. Like you might be interested to know that a lot of these materials they come from countries which are extremely poor, so it is easier to get those materials from them for cheap. वहां के लोगों का कितना बुरा हालत हो रखा है because of the unequal economic treaties which keep these materials flowing. So yes, AI and sustainability का at least environment का बहुत गहरा नाता है, and you need to sort of think about it when you are thinking larger picture of what AI should exist and what shouldn't, कि उस पे environment पे कितना असर हो रहा है. छोटे लेवल पे, even at a small level, this is something worth thinking about. Because let us look at the hardware. आजकल हर इंसान 2 साल में अपना फोन बदल लेता है, राइट? Every time you are buying a new phone, think about the cost on the planet, think about the lithium that is in that phone, think about the rare earths, think about अफ्रीका के कितने बच्चों के पेड़ पे लात मार के आपने वो फोन प्रकट किया है. सो these things exist और ये हमारे लाइफ का डे टू डे डिसीजंस में एग्जिस्ट करते हैं. वी फॉरगेट अबाउट these things. Now your one person's decisions are not going to save the planet. ठीक है, sustainability is something, it needs political will behind it, वरना आप अकेले sustainability नहीं कर सकते. It's not possible. But at least you can make people aware that these the digitization का जो नया इकोनॉमी है वो हवा में नहीं आया, उसके पीछे बहुत सारे रिसोर्स लगे हुए, वो रिसोर्स कहीं ना कहीं से आते हैं. That is something you can make people aware of. I hope that answers the question. Yeah, I think. Uh, Jash, do you want to continue? Yeah. Thank you so much, sir, for your time. It was a very interactive and informative talk. We definitely did learn a lot of things about policy making and its relation to AI also. Well, thanks for inviting me. Now I will take my leave. See you guys. If anyone of you wants to communicate with me, my email is mail@anupamguha.com. And because I'm a professor and I have to teach. I might be slow at responding to mails, but always happy to talk with anybody on AI and its relationship to society if that's a topic you are interested in. See you. Yeah, sure, sir. And there are some questions in chat box. We will try to compile them and forward them to you so that we can reply those students as well with their proper answers. All right. Yeah. Thank you for your time.